everyone, welcome to this new session on quantitative aptitude. My name is Ashish and today I am going to discuss one of the most favorite topics of examiners. In every competitive exam, you will definitely find questions on percentage. Not only in quantitative aptitude section but also in the data interpretation section. So it is one of the most important topics of your preparation. So let's start with solving some of the questions. So there are certain questions on your screen, 5 questions are there. Try to solve these questions using whatever method you know and try to find out how much time you are taking to solve these questions. Then we'll discuss few tricks using which you will be able to solve these questions within 5 to 10 seconds. So pause the video, solve the 5 questions and then come back again to see the solution. Before I start solving them, let's discuss the concept first. So percentage is 100th part of anything. So that is the basic definition of percentage. Before solving these questions, we need to know how to convert fractions into percentage. So fraction to percentage conversion we need to know. So there are certain fractions which are very important as far as your questions are concerned. So by remembering those fractions, your life will be very easy when it comes to questions of data interpretation and questions related to percentage. So for example, fraction अगर 1 है तो percentage would be 100%. फ्रैक्शन में 1 होगा तो परसेंटेज इक्वलेंट वुड बी 100%. अगर फ्रैक्शन होगा 1/2 तो सिंपल हाफ हो जाएगा, दैट इज 50%. इफ इट इज 1/3 so 33.33%. 1/4 is half of 1/2. 1/2 था 50%, तो 1/4 हो जाएगा half of 50%, that is 25%. 1/5 होता है 20%. तो यहाँ तक के फ्रैक्शंस तो मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो. इससे आगे के फ्रैक्शंस भी हमें कुछ याद रखने हैं विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द कैलकुलेशंस. So 1/6 is half of 1/3. 1/3 था 33.33, उसका हाफ हो जाएगा 16.66. 1/6 is 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/8 is half of 1/4. 1/4 था 25%, 1/8 हो जाएगा half of 25%, that is 12.5%. 1/9 is 11.11%. 1/10 is quite easy, simply 10%. And 1/11 is 9.09%. So these are the most frequently used fractions in solving questions related to percentage. तो इनको तो आपको याद ही रखना है. Try to remember these fractions because they will be directly used while solving the questions. In case you don't remember these fractions, so to convert a fraction into percentage, simply multiply it by 100. For example, 1 को convert करना था तो 1 into 100, half को convert करना था तो half into 100. There are some memory tricks to remember these fractions, वो भी मैं आपको बता देता हूँ so that you never forget these values. तो 1 तो easy था 100%, half को भी into 100 किया तो 50 आ गया. 1/4 is 1/2 का आधा, so 50 का half is 25%. 1/3 को याद कैसे रख सकते हैं कि इसमें 3 आता है हर बार, तो 33.33. Similarly 1/6 is half of 1/3, तो ये 33.3 था तो ये 16.66 हो गया. 1/7 is 14.28. इसको याद रखने के लिए you can remember 7 into 2 is 14 and 14 into 2 is 28. This is just memory trick, इसका कोई logic नहीं है, but it will help you in remembering those values. So 7 into 2 14, 14 into 2 28, so 1/7 is 14.28. 1/8 हमने देखा था 1/4 का हाफ, 25 का हाफ is 12.5. 1/9 and 1/11 को आप एज ए पेयर याद रख सकते हैं. 1/9 में 11 आएगा और 11 में 9 आएगा. So 1/9 is 11.11, so एक 11 इधर एक 11 इधर. 1/9 is 9.09, so एक 9 इधर एक 9 इधर. And 1/10 is quite simple, which is 10%. So any fraction से you can derive certain other fractions. For example,
1 by 3 is 33.33, so 2 by 3 would be double of this value, that is 66.66. Similarly, 1 by 4 is 25%, 2 by 4 is nothing but half, that is 50%. 3 by 4 is 3 times of this value, that is 75%. Similarly, 1 by 5 अगर 20% है, तो 2 by 5 will be double of this, 40%. 3 by 5 would be triple of this, that is 60%, and so on. 4 by 5 is 80%. Similarly, you can say that 2 by 6 is double of 16.6, जो कि 1 by 3 होता है, that is 33.33. Similarly, you can continue this series also. 1 by 7 अगर 14.28 है, 2 by 7 is 28.56, double हो जाएगा. 3 by 7 is triple of this value, that is 14 into 3, 42.84, and so on. So that is how you can calculate these fraction and extend the numbers. So 1 by 8 अगर ये था, तो 2 by 8 is 1 by 4, 3 by 8 is thrice of this value, that is 37.5%. So it's advisable that you remember all these values. Now come back to our questions and try to apply this knowledge into solving these questions. So usually conventional method क्या होता है percentage solve करने का, कि you can do 12.5 upon 100 into 184, then you can calculate. So in certain exams you will have online calculator available with you. If the calculator is not available, this calculation will take a lot of time, especially in the questions like these, यहाँ पे decimal values. So उसमें these tricks will be immensely helpful for you. So for example 12.5% हमें निकालना था 184 को. So rather than doing this, we can simply check 12.5% का fraction कितना होता है. So 12.5% is nothing but 1 by 8. So simply आप क्या कर दीजिए, 1 by 8 निकाल लीजिए 184 का. So that will be 8 into 2, 16, and 8 into 3, 24. 23 will be your answer. So hardly 5 seconds में you can calculate this value. Similarly 37.5 of 464 हमें निकालना था, तो 37.5 is nothing but 3 by 8. 464. So 8 into 5 and 8 into 8, 58 into 3, that is 174. Third question, 42.84% of 126. So 42.84% था हमारा 3 by 7 of 126. 7 into 8, 18 into 3, 54. Now you may say that it's not necessary कि जितने fractions हमने ये लिखे हैं इन्हीं में से सारे questions आएंगे. You are absolutely right. इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे questions आएंगे. तो अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है परसेंटेज की तो क्या करें. फॉर एग्जांपल 31.2% है, 52% है, दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू द फ्रैक्शंस दैट वी हैव नोटेड डाउन. तो उसके लिए क्या कहेंगे वो भी देख लीजिए. 1/10 हमें पता था 10% होता है, तो सबसे ईजी है कि आप 10% निकाल लीजिए किसी भी वैल्यू का. सिमिलरली 1/100 इज़ 1%, 1/1000 इज़ 0.1%, एंड सो ऑन. So these three fractions will be very useful while calculating other values. So for example 31.2% of 260 निकालना है हमें, तो 260 का सबसे पहले आप 10% निकाल लीजिए. वो निकालना आसान है, सिंपली 1/10 कर दीजिए. तो इस वैल्यू का 1/10 होगा 26, तो 10% हो जाएगा 26. 31.2 हमें निकालना है, तो पहले 30% निकाल लेते हैं. तो अगर 10% 26 है तो 30% विल बी थ्राइस ऑफ 26, so that will be 78. अब बचा 1.2% और 1% हमें पता है 1/100 होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2.6, तो ये हो जाएगा 1%. अब बचा 0.2%, हमें पता है 0.1% इज़ 1/1000, सो दैट विल बी 0.26. तो 0.2% डबल हो जाएगा इस वैल्यू का, सो 0.2% विल बी डबल ऑफ 0.26, दैट विल बी 0.52. अब 31.2 के लिए तीनों को ऐड कर दीजिए, सो दैट विल बी 1 and 8. 81.12 will be your exact answer. अब ये सारी कैलकुलेशन
आफ्टर ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू मेंटली. ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया सो दैट आपको समझ आ जाए इजीली, बट ये आप प्रैक्टिस के साथ मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन सिंपली इन योर माइंड कैलकुलेट 10%, देन मल्टीप्लाई इट बाई 3, देन 1% डिवाइडेड बाई 100, सिमिलरली 0.1% का डबल, एंड यू कैन ऐड दीज वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 52% ऑफ 126. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, 50% निकाल लीजिए. 50% के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हाफ करना है. तो 126 को कर दीजिए हाफ, दैट इज 63. अब 2% और बचा. 1% हम इजीली निकाल सकते हैं 100 से डिवाइड करके. तो 1% होगा इसका 1.26. तो 2% हो जाएगा डबल ऑफ 1%. 1.26 का डबल इज 2.52. इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 52% निकल जाएगा, 65.52. So that is how you can solve these questions related to percentages, and these tricks will be very helpful not only in quantitative aptitude but in DI questions also. It will make your life very easy while calculating the data interpretation questions. So I hope you liked those tricks. If you have liked the session, you can press the subscribe icon, and if you have any query related to your preparation, you can write down to this email ID and we'll get back to you. With that, we come to the end of this session. We'll again meet in the next session. Till then, keep practicing.